good morning students. I hope you all are great and doing good in your studies. I am your computer teacher and today we are going to do our very first chapter, which is classification of computers. So without wasting any further time, let's start the chapter. The name of our chapter is classifications of computer, and the topics which we would learn in this chapter are categories of computers on functionality and categories of computer on size, speed, processor and special computers. Now, computer is an electronic device जिसको use किया जाता है in different places for different purposes. Now, in the previous class, we have learned about evolution and generations of computer. Now, in this chapter, we will learn about different types of computers. Nowadays, different types of computers are used that can be categorized on the basis of their functioning, size, speed, processing power, and cost. Now, categories of computer on functionality. That means हम functionality की basis पे यहाँ पे computer को classify करेंगे. On the basis of their functioning, computers को हम classify कर सकते हैं three main categories में. First आता है digital computer. तो digital computer refer करता है एक ऐसे computer को that uses binary digits to generate, process and display data. Now, जो results होते हैं वो produce किए जाते हैं by computers. They are more accurate than the analog computers. तो जो रिजल्ट डिजिटल कंप्यूटर्स हमें देते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं एज कंपेयर टू दी एनालॉग कंप्यूटर्स. ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर्स दैट वी यूज लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड स्मार्टफोन, ये सब एग्जांपल्स होते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स के. नाउ एनालॉग कंप्यूटर क्या है? ये एक ऐसा कंप्यूटर है विच इज यूज्ड टू प्रोसेस एनालॉग डेटा. नाउ दीज वर द फर्स्ट which used at the time of the 1950s to 1960s. इस टाइम पे इन कंप्यूटर्स को यूज किया जाता था. ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड ये परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशंस विद द हेल्प ऑफ मेजर्स. ये जो कंप्यूटर्स हैं ये ऑपरेट होते हैं बाय मेजरिंग इंस्टेड ऑफ काउंटिंग. ये मेजर करते हैं कॉन्टिन्यूसली चेंजेबल फिजिकल क्वांटिटीज जैसे वोल्टेज, प्रेशर, वाटर फ्लो एटसेट्रा. दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स जनरली डिस्प्ले करते हैं हमें आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ. Examples of analog computers are mercury, thermometer, speedometer in cars and etc. Now, hybrid computer रेफर करते हैं एक ऐसी कंप्यूटर कैटेगरी को जो प्रोवाइड करते हैं हमें फंक्शनैलिटी ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स while processing and displaying data. That means यहाँ पे एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर्स के जो फीचर्स हैं, जो फंक्शनैलिटीज हैं, वो यहाँ पे हमें साथ में मिलती है. Now, ये यूज करते हैं स्पीड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर. This type of computers are generally used in scientific researches and specialized applications. Heartbeat measuring machine एक common example है of hybrid computer. Now, we can now track our health goals by synchronizing the smartwatch. हम smartwatch की help से अपनी health को track कर सकते हैं to the GoEye app for in-depth analysis and हम एक personalized recommendation ले सकते हैं from our health coach. It has innumerable features within the app जो हमें क्या करते हैं एक पॉजिटिव शिफ्ट प्रोवाइड कराते हैं टू अ हेल्दियर लाइफस्टाइल. इट हैज वाइटल्स विद इंटीग्रेटेड SP02 मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर, बॉडी टेम्परेचर, BP मॉनिटर एंड मच मोर. कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर ऑन साइज, स्पीड एंड प्रोसेसर. कंप्यूटर्स डिफर होते हैं इन साइज, स्पीड एंड प्रोसेसर. ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स जो कंप्यूटर्स हैं हम उन्हें 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट आता है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसीज भी बोलते हैं. एक टाइप ऑफ कंप्यूटर है दैट हैज वन माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स प्रोसेसिंग यूनिट. नाउ दिस टाइप ऑफ स्मॉल कंप्यूटर इज मेड टू बी यूज्ड बाय सिंगल यूजर एट अ टाइम. ये जो कंप्यूटर्स होते हैं इनको एक सिंगल यूजर ही ऑपरेट कर सकता है एट अ पर्टिकुलर टाइम. लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स बिलो. पहले आता है लैपटॉप. लैपटॉप क्या है? एक पोर्टेबल एंड स्मॉल पीसी है दैट कैन बी केप्ट ऑन योर लैप एंड जो सुटेबल होता है फॉर यूज वाइल ट्रेवलिंग. इट हैज बिल्ट इन माउस, एक मॉनिटर एंड अ कीबोर्ड. ये वर्क करता है ऑन रिचार्जेबल बैटरी. लैपटॉप जो होते हैं इनको मोस्टली यूज किया जाता है बाय मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स जो ट्रेवल करते हैं फ्रीक्वेंटली फार फ्रॉम देयर ऑफिसेज. देन वी हैव डेस्कटॉप. ये एक पर्सनल कंप्यूटर है विच इज प्लेस्ड एट अ सिंगल प्लेस ऑन अ डेस्क या फिर टेबल. Now, all its peripherals, जो भी इसके peripherals होते हैं, that means our input output devices, वो connected होते हैं through wires या फिर wireless भी हो सकते हैं. Now, due to its size and power requirements, we cannot carry this type of computer. हम इस तरीके के कंप्यूटर को carry नहीं कर सकते. They are generally used in schools, offices, etc. Tablet ये एक portable computer है जो laptop से smaller होते हैं. It has a touch screen as its primary input device instead of mouse. ये ऑल्सो वर्क करते हैं ऑन रिचार्जेबल बैटरीज
but has less features than a laptop. टैबलेट के अंदर लैपटॉप से थोड़े कम फीचर्स होते हैं. Tablets are commonly used by professionals in various organizations. Now, the term tablet was first introduced by Microsoft in 2000. Supercomputer largest और fastest होते हैं of all types of computers that can perform billions of instructions per second. Even some computers require करते हैं much space as that of a floor of a building. Now ये process कर सकते हैं बहुत large amount of data very quickly. They are used by government departments to do tasks जैसे weather forecasting and rocket launching. For example, Pace, Titan, Sunway, Leulite, Pratyush, Mihir, etc. Now we have mini computer. Mini computer is bigger and more powerful than a microcomputer. They are slightly more expensive. ये जो है ये थोड़े ज़्यादा expensive होते हैं than the microcomputers. It can contain one या फिर more microprocessors as its processing unit. ये जो type of computers होते हैं ये mainly use किए जाते हैं for scientific and engineering computations. Mini computer has capability to serve a number of users simultaneously. For example, PDP-11, PDP-8, HP-3000, etc. Mainframe computers बहुत large होते हैं, fast होते हैं and more powerful होते हैं than the mini computer. It can have multiple microprocessors. यहाँ पे हमारे पास multiple microprocessors हो सकते हैं as its processing unit. Some mainframe computers are so big that वो require करते हैं space as large as that of a room. Such computers are generally used in big organizations जहाँ पे huge amount of data को हमें use करना होता है जैसे banks. For example, IBM series, IBM 4381, ICL 39, etc. Specialized computer एक hardware device है that have the capabilities of general purpose computer, but उसको design किया जाता है only to do specific tasks. Now let us learn about these computers in detail. पहले आते हैं embedded computers. Embedded computer क्या है? ये कंप्यूटर जो होते हैं ये परफॉर्म करते हैं कुछ specific functionality and used today in various applications. It is different from general purpose computer like a PC. Let's learn about some embedded computers in detail. तो फर्स्ट आता है हमारे पास automated teller machine which is ATM. ये अलाउ करता है हमें to withdraw money from our bank accounts anywhere and anytime. और ये जो मशीन है ये कनेक्टेड होती है हमारे बैंक के सर्वर से. whenever हमें मनी को विदड्रॉ करना है फ्रॉम द एटीएम एक इक्वल अमाउंट जो है वो डेबिट हो जाता है फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट. वी कैन ऑल्सो डिपॉजिट मनी, ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर एंड इवन हम प्रिंट कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ट्रांजेक्शन. फिर आते हैं हमारे पास डिजिटल कैमराज. ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज डिवाइसेस हैं. ड्यू टू द यूज ऑफ एम्बेडेड कंप्यूटर्स इन इट, these cameras become very smart and ये provide करते हैं lots of features that were not present in the older cameras. Now main function जो होता है of a camera is to capture photographs and shoot videos. It also has a memory जो store करता है हमारे captured photos को and videos. Microwave oven. Now ये allow करता है हमें to warm and cook food. ये contain करता है computer system embedded inside जो control करता है time and temperature. It often has a display keyboard and number of sensors and actuators. Now handheld computers. Handheld computers क्या है? ये एक miniature computer है जो conveniently स्टोर किया जा सकता है इन अ पॉकेट या फिर ऑफ सफिशिएंट साइज का ये होता है and used while holding it on our hands. Most of the handheld computers have touch screen in which we input data by using our fingers. This is smartwatch. एक wearable computing device है जो closely resemble करता है एक wrist watch की तरह या फिर एक other time keeping device की तरह. ये provide करता है हमें features of an older watch and some advanced features of smartphone जैसे connecting to the internet, using mobile apps and making phone calls, etc. Then we have personal digital assistant PDA. ये एक handheld device होता है that combine computing, telephone, fax and networking features. Now typical PDA can function as a cellular phone, fax sender and personal organizer. Now it also has a pen like stylus. यहाँ पे हमारे पास एक pen like stylus होता है जो allow करता है हमें to give input. Now it can also accept handwritten input directly from the touch screen. Let's learn about some handheld computers in detail. Smartphone. It is a type of cellular telephone with an integrated computer and other features जैसे operating system, web browsing and the ability to run software applications. Now it has a touch screen and ये rechargeable battery के साथ में आते हैं.
साइज जो होता है स्मार्टफोन का वो स्मॉलर होता है देन दी टैबलेट कंप्यूटर। गेमिंग कंसोल, इसको हम वीडियो गेम कंसोल भी बोलते हैं। ये कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसको स्पेशली डिजाइन किया गया है टू प्ले वीडियो गेम्स। वी कैन कनेक्ट द गेमिंग कंसोल विद टेलीविजन टू प्ले गेम्स एंड सम कॉमनली यूज्ड एग्जांपल्स जो है ऑफ गेमिंग कंसोल्स आर PS5, Sony PlayStation, Nintendo GameCube and Nintendo Y. First gaming console named Brown Box was developed by Ralph Baer in late 60s. Now surf the internet and find some different types of smartwatches available along with their features. Let's revise the chapter. Computer is an electronic device जिसको use किया जाता है in different places for different purposes. On the basis of their functioning, computer को हम classify करते हैं three categories में: analog, digital and hybrid computers. Computer different हो सकते हैं in their size, speed and processor, and on the basis of these three factors, computers को हम four categories में classify करते हैं: micro computer, mini computer, mainframe computer and super computer. एंड एम्बेडेड कंप्यूटर ये एक माइक्रो कंट्रोलर होता है या फिर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम है डिवाइस्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। मिनी कंप्यूटर स्मॉल होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर, दे हैव द कैपेबिलिटी टू सर्व नंबर ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। मेनफ्रेम कंप्यूटर्स बहुत लार्ज होते हैं, फास्ट होते हैं, पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। हैंडहेल्ड कंप्यूटर एक मिनिएचर कंप्यूटर है जिसको हम कन्वीनियंटली स्टोर कर सकते हैं इन अ पॉकेट एंड हम उसको यूज कर सकते हैं व्हाइल होल्डिंग इट इन आवर हैंड। डिजिटल कैमरा, माइक्रोवेव एंड ATM ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ एम्बेडेड कंप्यूटर्स। स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, PDA एंड गेमिंग कंसोल आर सम कॉमनली यूज्ड एग्जांपल्स ऑफ हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स। वी हैव सम न्यू वर्ड्स। फर्स्ट इज डिजिटल कंप्यूटर, एक ऐसा कंप्यूटर जो डिजिट्स का यूज करता है यानी कि बाइनरी नंबर्स जीरोस एंड वंस टू जनरेट, प्रोसेस एंड डिस्प्ले डेटा। एनालॉग कंप्यूटर विच इज यूज्ड टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। हाइब्रिड कंप्यूटर जो हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है बोथ एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की while processing and displaying the data. Embedded computer ये special type of microprocessor based systems होते हैं that is developed for performing specific tasks. Handheld computer miniature है जो convenient होते हैं to hold in our hands and store in our pockets. Let's do the exercise of a chapter. So our first question is which of the following is a microcomputer? Desktop. Which type of computer operates by measuring instead of counting? Analog. Which of the following is an example of embedded computer? Microwave. Which type of computer is Mehir? Mini computer. And it is a pen-like stylus which allows us to give input. It can also accept handwritten input directly from the touch screen PDA. Let's do fill in the blanks. A dash refers to the computer which provides functionality of both analog and digital computers. Hybrid computer. Dash was Bharatiya first supercomputer developed in 1991. Param. A dash console is also called video game console, gaming console. A dash is a portable computer that is suitable for use while traveling, laptop. And dash is a wearable computing device which closely resembles to a wristwatch, smartwatch. Let's do true false. Computer is not differ in the size, speed and processor. False. Mini computers are smaller than microcomputers. True. IBM 4381 is a mini computer. True. Mainframe computer is very large, fast and more powerful than mini computer. True. Handheld computers can easily be stored in our pocket. True. So students, this was a complete chapter about computer classifications. I hope it is clear to you. Do revise it again and also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.